demonstration is also questioning like why to suppress like democratic dissent like this, है ना? Why can't we paint some other things instead? हम लोग see all the, if you follow this whole thing right, all our cultural like ecosystem like iconographies are here, but उसके बीच में dam is just not suitable like. But कोर्ट के ऑर्डर से तो यहाँ पे अभी रीपेंट होगा, वापस डैम हाँ तो we will comply to that. कोर्ट के ऑर्डर को will comply, but then we are requesting the court to consider it ना, कि मतलब ये how is it suitable, मतलब एक तरह से देखने से it's like a propaganda art also ना, but we are not sure कि like why with it. So एक तरह से artists who were involved, we want to question them also कि if you were painting for 2-3 months did you not consider कि इतना हम लोग का important cultural iconography के साथ डैम का पिक्चर कैसे आ रहा है, and if you are saying this is a reality of Arunachal, present Arunachal, is this how you want it to continue, and if is our protest not a reality, you know what I mean, is it not a reality, are we not Arunachalis, are we not people from the citizens of this country, है ना? So and then how is public art particularly your art, you know what I mean, like कैसे आप उसका इतना एजेंसी ले सकता है, तो you have to be accepting of criticism also, you know, तो वही है, but this was no intention to hurt them or the public also, but definitely we still request कि court जो अगर इसमें कुछ और डाल सकता है तो बहुत अच्छा होगा, जैसे कि there are so many, you know, हम लोग का पुलिस, हम लोग का खुद का even in आदि community right, मातमोर जामो है, and not just that, even world war में भी हम लोग का निशी भाई आदि बहुत सारा, not just like I'm not pointing out any tribe, okay, but people from Arunachal have also went ahead and fought wars, protected our own borders, our country. Why can't we celebrate them, you know, instead of dams or ये जो already controversial है, it has a bloody history, you know, people in Tabang were shot, people protested, terrorized in Dibang Valley, so many people, it's just triggers, no, keeps triggering, तो मतलब government से भी अपील है, court से भी अपील है हम लोग के तरफ से कि can we just put something else here and also release नीलम and इबो ना, कि वो लोग ने तो क्या गलती है, ये यहाँ में दिन दहाड़े आदमी पोल्यूट कर, so उसको कुछ नहीं होता है, ये कर दिया तो it's not a big deal ना, आप मैसेज को आप समझिए ना, वो है बात, इसके बदले में we can put anything else, कुछ और डाल दो ना, हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है अरुणाचल का, आर्टिस्ट हो गया या फिर लिटरेचर में हो गया या फिर आवर फ्रीडम फाइटर्स हो गया, those people are more relevant than the dams, our people are more important, you know, and then to also question what is development, क्या सिर्फ development डैम से ही आएगा क्या, is our mental happiness not development, is our like you know biodiversity conserve होना वो development नहीं है क्या, मतलब. So this is a joint statement we're trying to distribute, a joint statement by citizens and groups of anti-dam movement. तो एक तरह से देखने से this is for the public, this is a public information because dams को लेके अभी इतना controversy हुआ है that our friend Nilim was arrested and our friend Ibo was arrested. So we are we are not questioning the court order definitely, but we are also trying to disseminate the information public में कि why this message was left here, why we said, why it was written no more dams ना, और why no more dams issue चल रहा है अभी अरुणाचल में. So ये joint statement में I am trying to circulate to people, or people read newspapers, and then इसमें basically अभी दिबांग वैली में क्या हो रहा है कि 5 DMP दिबांग मल्टीपर्पज डैम प्रपोज हो चुका है, compensation was released but it was compromised in a very large extent. तो अभी there is one more project coming up, Italian hydropower project, which is 3080 megawatt का, which is world's largest dam, and we have to look at the pros and cons also na. And my question is, why is development equated with dams? क्या सिर्फ dams से ही development आ सकता है क्या? There are no other alternative ways to produce state revenue, to produce what do you call it, electricity. There are so many other alternative ways. There are existing dams already. अभी नीपको का नोटिस निकला है कि डैम्स अभी वो होगा, नोटिस निकला है कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सो नीचे में फ्लड होगा, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो जस्ट लाइक दैट डाउनस्ट्रीम पीपल आर ऑल्सो देयर, यू नो, तो उनको कौन कंसल्ट करेगा? Before we make so many, recklessly we design so many dams in our state na. So according to the data we have, so Arunachal has 57,000 megawatt proposed here Arunachal mein now.
So already like there are so many mega dams existing. I mean, Nipko wala Langa Nadi dam is existing, which is around 450 megawatt ka. But still every year it floods Assam. So are there like, is this sustainable? It's not sustainable. So उस तरह से देखने से what I can brief is also, I would request the media people also to go through the joint statement and please like definitely पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों स्टेटमेंट पढ़े कि ऐसा क्यों मैसेज है यहाँ पे. एंड दिस वाज नॉट टू हर्ट एनी अदर सेंटिमेंट. किसी आर्टिस्ट का जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया उसको हर्ट करना नहीं था. देयर वाज नो, कहीं में तो और जगह में तो वो नहीं किया ना, गंदा नहीं किया. इट्स अ मैसेज, यू नो, इट्स अ मैसेज. हम भी पब्लिक है, आप भी पब्लिक है ना. Why should we divide amongst ourselves? We are also public, you are also public. If you think this is the reality of Arunachal, dam is the reality of Arunachal. Not wanting dams anymore is also reality of Arunachal. So these are all very much here. So and then in an average, na, according to see, it's written here also. In an average, a dam can displace 13,000 people in an average. It's a study done by World Bank. So I mean, इन और अरुणाचल क्या सीन है कि एक कोई ट्राइब्स ऐसा भी है जो 5,000 से भी ज़्यादा नहीं है. इदुमिशमी's population is only 12,000 in the last census. So if a dam can displace that many, an average dam can displace 13,000 population. हमारे अरुणाचल में तो ऑलरेडी इतने सारे ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स है which will be displaced. हमारा कल्चरल आइडेंटिटी इज गॉन, हमारा जमीन इज गॉन, राइट. And then it's not just in Dibang Valley और Subansiri. तवांग में भी हुआ है प्रोटेस्ट, तवांग में भी रुका हुआ है, सियांग में भी रुका हुआ है. Then so many areas, total 57,000 proposed है. So you know, in an earthquake prone area, 1950 का earthquake जो 8.2 magnitude का आया था, there was the largest anybody had ever seen और बहुत life loss हुआ है. And gravity dams itself will trigger earthquake even before an earthquake actually happens, which is, we are already in a seismic zone 5. The most sensitive Himalayan belt. Usme if you are going to bring more, you know, trigger those earthquakes, who will be responsible बाद में जब loss होता है? Are we calculating all that cumulative impact assessment, cultural impact assessment, you know, EIA को follow up कर रहे हैं क्या? So it's just an appeal to our Arunachal ka people, to Assam people, to India, you know, rest of the world. These are the world's largest last remaining biodiversity hotspots, you know. अभी इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी इतना बारिश हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू रीपेंट दिस ऑल्सो. बार बार पेंट करता है, बार बार बारिश इसको हटा रहा है. जस्ट नाउ वी पेंटेड द फ्लावर ऑल्सो, फिर वो भी पूरा डूब गया है ना. आई मीन पानी जा रहा है तो वी आर फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर ना, लेकिन पानी तो अभी कर रहे हैं, तो अभी हम कैसे उसको वो कर सकते हैं? अभी वी आर ट्राइंग टू डू दिस सैम्पलिंग करके बंद करने के लिए. एंड अगेन लाइक दिस वॉज नॉट टू हर्ट एनी सेंटिमेंट ऑफ आवर लोकल आर्टिस्ट ना. लोकल आर्टिस्ट को हर्ट करना नहीं था सेंटिमेंट. इफ लोकल आर्टिस्ट आर हर्ट, वी आर सॉरी कि ऐसा हो गया कि यू नो एक तरह से आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का काम बिगाड़ रहे हैं. ऐसा नहीं है. द मैसेज इज बियॉन्ड दैट. द मैसेज इज फॉर द होल एंटायर स्टेट एंड यू नो. सो सॉलिडारिटी स्टेटमेंट है ये, जॉइंट स्टेटमेंट है, इट्स फॉर ऑल. सो आई एम ग्लैड लाइक लॉट ऑफ सपोर्ट हैज़ ऑल्सो कम अप फ्रॉम अदर एंटी डैम मूवमेंट्स. तो अभी जो हो रहा है तो आवर डिमांड्स, आई विल जस्ट इनसाइड द डिमांड्स वंस कि जो वी वांट कि cumulative environmental impact assessment of dam building across Arunachal Pradesh, especially in Dibang Valley, including impacts of downstream communities of Assam, should be commissioned afresh with an equal emphasis on downstream impacts of life, river, livelihood, etc. सिर्फ हम लोग का अरुणाचल का नहीं, नीचे का डाउनस्ट्रीम आसाम का भी वो लेना है, क्यूमुलेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स. अभी हर साल लखीमपुर खुद से फ्लड में डूबता है, हर साल वेस्ट बंगाल फ्लड में डूबता है. सो मेनी थिंग्स आर रिलेटेड. नो, वी आर कंट्रोलिंग बिग अनप्रेडिक्टेबल रिवर्स. नाला तो कंट्रोल नहीं कर सकता अच्छे से, नदी को कैसे कंट्रोल कर? इतना बड़ा लेवल में मेगा डैम्स, 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, इट्स थ्रेटनिंग एवरीबडी इन द स्टेट, not just one particular community, and it's happening in every community, by the way. So and a discussion on the socio-cultural disintegration due to dam construction and displacement. मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट होता है डैम से, नो, उसका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, लेकिन किस वे में हो रहा है? अरुणाचल में एवरी ट्राइब हैज़ देयर ओन टेरिटरी, वी कैन नॉट ब्रीच अदर ट्राइब्स एरिया.
सो दीज आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेज नुआंसेस दैट वी आर अरुणाचली, और हम लोग का यहाँ में कैसे चलता है सिस्टम, वो सब भी समझना है। हर सेंटर से एक आ गया थोप दिया, ऐसे नहीं होता है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड हम लोग का ग्राउंड में भी क्या क्या है, नो हम लोग का ट्राइब्स कैसे फंक्शन करता है, हाउ वी को एग्जिस्ट विद इन सो मेनी ट्राइब्स टुगेदर। तो नेचुरल हजार्ड रिस्क असेसमेंट पोज बाय डैम्स, वो भी देखना है। अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इरोजन हो गया, यू नो वेदर चेंजेस, these things we need proper research scientists on ground for these things ना। तो एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कैसे एडवर्सली अफेक्ट करता है हम लोग को, लाइक इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को, बिकॉज वी आर नॉट सो लाइक वी वांट टू बी मॉडर्न बट we are still like jumping from like a very traditional system to a radical capitalist neoliberal world which is not suiting our you know, हम लोग का सूट नहीं कर रहा है हम लोग का कम्युनिटीज़ को वो चीज़। Viability of the dams, which should look at whether a project plan for a span of less than 50 years can offset the loss of biodiversity. So इतना rich biodiversity है अरुणाचल का। When you see अरुणाचल tourism में बोलने से भी everybody comes here for the landscape, for हम लोग का greenery, not for dams or anything. Okay, so look at हिमाचल, टूरिस्ट स्पॉट है, इतना सारा डैम्स है, लेकिन इतना प्रॉब्लम है लोकल लोग को ना। लुक एट तीस्ता, छोटा छोटा रिवर, छोटा छोटा डैम बना के भी इतना ज़्यादा बना दिया कि पूरा पानी सूख गया, पूरा रुक गया, लाइक पूरा वो लोग का ख़त्म है। तो स्टडी ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑन द कम्युनिटीज पोज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड डाइवर्जन ऑफ रिवर्स, understand, compare and disseminate knowledge to people of Arunachal from the numerous studies that show the adverse impacts of dams and communities. तो और एक last point which is very important is implement a dam decommissioning policy for the entire country of all dams which are blocking rivers and making people more vulnerable to disaster. जैसे कि इतना सारा डैम्स लोग है जो बन के उसका नो फॉलो अप, ऐसे बन गया, बैठ गया, इट्स होल्डिंग द वाटर फॉर एवर। तो उससे इतना सारा कंटामिनेशन प्रॉब्लम्स निकलता है, एक्वेटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, रिहेबिलिटेड पीपल आर नॉट फॉलोड अप, वो लोग कहाँ चला गया, नोबडी नोज।